Okay, so we are going to start with the third part of central dogma, that is translation. Translation में क्या होता है? We are producing a protein chain with the help of mRNA. As you can see in this case, this is the mRNA. This complete thing is the mRNA. Okay, and you are ultimately producing this protein chain with the help of this mRNA. Now this structure is called ribosome. What happens here in this case is this ribosomes comes and sits on this mRNA, okay, and then a protein chain is synthesized. Now when we study this chapter, we have some objectives in our mind. Let's look at the objectives first. The first objective is to understand the structure and function of the ribosome. Okay. Second one is to understand the function of the charged tRNA, and third one is understand translation, initiation, elongation, and termination. These are the different steps of translation, and the last one is to understand the different functions of translation factors which are involved in this process. Okay, let's move. Yes, so this is the chromosome. Okay, and now this chromosome is made up of DNA and some proteins, obviously, but this DNA gives rise to mRNA. Okay, and this mRNA later on produces protein. Okay, in this way. Now this process is called transcription, where you produce mRNA from DNA. Okay, and this process where you produce protein from this mRNA, that is called translation. Now this complete thing is called central dogma. Okay, so transcription and translation. Apart from this, if you copy DNA from DNA, that is called replication. Okay, let's move. This is protein. Okay, fine. Now this is the ribosome structure. Okay, you can see two subunits are there. This one is a larger subunit. This is a smaller subunit. A ribosome is made up of two subunits, larger and smaller. Now this is called a charged tRNA. As you can see in this tRNA, you can see a spherical structure like a ball. Okay, now this is an amino acid. Now if an amino acid is present in this case, then this tRNA is called charged tRNA. And if the amino acid is missing, like here you have no amino acid, that is called uncharged tRNA. Okay, alright. So now these are some different factors involved in the process of translation. The first three factors, IF1, IF2 and IF3, these are called initiation factors. They initiate the process of translation. Okay, IF1 initiation factor 1, number 2, number 3 and so on. These are three different factors of initiation. Okay, then there are elongation factors like EFTS, G, TU. Okay, and then finally you have some termination factors as well. Okay, now these are not required. You just need to remember that there are some factors which are involved in initiation and elongation. These up to EFTS, you have to remember these names. Okay, next. Yes, now this is in this way the ribosome comes and binds, and then it moves in this direction. Okay, now you can see this is the ribosome and this is the growing peptide or a polypeptide, which is made up of a number of amino acids. Okay, in between a number of amino acids you have some bonds which are called peptide bonds. Okay, now a peptide bond or amino acid have two different terminals, two different ends or terminals. Okay, one is called N terminus or terminal, one is called N terminus or terminal because it is rich in nitrogenous compounds. Okay, yeah, amino group, you can say it is rich in the amino group. Okay, so on one end you have amino group and on the other end you have the carboxyl group. Okay, COO group. So in this way there are two different terminals. Right now you don't have to focus on N terminus, you just need to understand that this is the ribosome, and from this ribosome you have some growing peptide coming out. Okay, and the process starts from this AUG, which is the start codon. Okay, and this its location is 5' at the 5' end. Now this complete thing, this greenish portion or greenish line like structure, linear structure, that is the mRNA. Okay, and this thing is the stop codon. That means the process of translation will stop here. Okay, this stop codon is of three different types. It can be UGA, it can be UAA, like in this case it is UA, or it can be UAG as well. Okay, so there are three different stop codons. Okay, let's proceed. Now you can see this is the large subunit, this one, and this is the small subunit. Fine. Yes.
Now there are some, this unit can be measured in terms of some Swedberg units, or you can say sedimentation coefficient. Okay, you need to understand the different values, like in this table you can see, in case of prokaryotes, the small subunits, which is this one, the small subunit, is made up of 30s, the rate of sedimentation. Okay, what is S? The rate of sedimentation. Okay, sedimentation coefficient. It tells you the value of sedimentation, how faster is the rate of sedimentation. So in case of small subunit, the rate of sedimentation is 30, is found to be 30. Okay, in case of large subunit like this one, it is found to be 50s. Remember that these are the values for prokaryotes. Okay, now when the whole ribosome is made to sediment at the same time, that means you are taking large subunit and small subunit together. In that case, the rate of sedimentation will come as 70 and not 80. Okay, you don't need to add these two terms, because it just simply means the rate of sedimentation. Okay, it is not an algebraic value that you should add 30 and 50 will get 80. No, not like that. Now if you have a complete ribosome which is made up of both subunit, large and small, and if you want to find the rate of sedimentation of the whole ribosome, then the rate of sedimentation will come as 70s. But if you take the rate of sedimentation of the smaller subunit only, then it will come as 30s, or if you take the rate of sedimentation of larger subunit, it will come as 50s. Okay, similarly in case of eukaryotes, the small subunits have a sedimentation rate of 40, okay, and the large subunit has sedimentation rate of 60. Okay, and again if you take the whole ribosome, and then if you calculate the rate of sedimentation, it will come as 80s and not 100s. Okay, so just remember these values of prokaryotes and eukaryotes. That's it. Okay, now let's talk about the ribosome cycle. Now ribosome comes and binds over this. Okay, this is the start codon, and then it moves, like in this direction it moves. Let's see, it comes and binds and then starts to move. It moves over complete mRNA and it stops at the stop codon. Okay, at this position it will dissociate. Let's look at it once again. It will dissociate upon reaching this position. Okay, so this is called termination of translation. So it will start at the start codon, which is AUG, and it will stop at the stop codon, which can be of three different types. Okay, in this example you have UAA. Okay, it is also called Aushray or Ocray. Okay, let's proceed. Now ribosome reads mRNA in triplet codons. Now this is the ribosome. This complete structure is the ribosome, and this greenish portion is the mRNA. Okay, now this mRNA has got some codes, okay, on its surface. mRNA is made up of a number of nucleotides, and the nucleotides are read in the form of codons or triplet codons. Like AUG is the initiation or start codon. Okay, the process of translation will start from AUG. Okay, now you can see this is the tRNA. Okay, and it is charged because it contains an amino acid. Now it can be any amino acid, but preferentially if we want to start a process, we need methionine. Okay, this is F-methionine. F-methionine means formyl methionine. Okay, a formyl group is attached to this methionine, F-methionine. So bacteria के अंदर में F-methionine normally होता है. Anyways, now if you want to make a pair between tRNA and this mRNA, this is the mRNA, right? This is the mRNA. Okay, a ribosome is sitting on the mRNA. Okay, please try to visualize the structure. देख सकते हो सामने, ये देखो mRNA and this is the ribosome. Now this tRNA will come, this will come, okay, this will come and this will fit with AUG. As you can see, this is A, U and G. What is this? UAC. Okay, so these two are complementary of each other. Okay, AUG and UAC are complementary of each other. That means A will bind with U will bind with A, C will bind with G. Okay, so together they will form a bond. Okay, now if I call it a codon, so this is called anticodon or anticodon, whatever, जो भी बोलना है बोल सकते हो, anticodon or anticodon. So this is codon and this is anticodon. So this tRNA along with the amino acid, this will come and it will bind over here with the start codon. Okay, one more thing, this is E region, this is P region and this is A region. Okay, they have some names. Okay, for the time being just याद रखो, this is E, this is P and this is A. इसका नाम अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद. चलो
Next, yes, now this will come and bind over here. Now there is this tunnel over here through which the mRNA is threaded inside, or it is weaved inside. Okay. Yes, the ribosome contains 3 binding sites. This is called amino acyl tRNA site. A site means amino acyl tRNA site. This is peptidyl tRNA site or P site, and this is exit site. Okay, so there are 3 different sites. Now, the growing protein, what will happen? There's a tunnel over here, this one. So the growing protein will move outside through this tunnel. You will see in the coming slides. So let's start the process. Ribosome brought to mRNA, and ribosome properly aligned over start codon. Okay. Next, P site of ribosome. Remember this thing. The P site of ribosome containing T charged tRNA. The tRNA is bonded to the P site. Okay. Now one more thing, the initiation process differs significantly in prokaryotes and eukaryotes, and we just have prokaryotes in our syllabus. We don't need to study about eukaryotes. Okay. Initiation is aided by translation initiation factors, obviously. Okay. So this is the first step. Okay. First, the 2 RNA subunits will come and bind at the P site. Okay. At the AUG rather, I will say at the AUG. Okay. And then the tRNA will come and bind at the P site. Watch it once again. tRNA comes and binds at AUG. Okay. Let's move. Now, translation initiation requires a number of factors. There are 3 different factors, and these factors first bind with the 30S subunit. Okay, so these are the different functions involved. You may write the different functions in your notebook. IF1 prevents tRNA from entering A site. You will see in the coming slides how it prevents tRNA from entering A site. Okay, IF2 binds IF1 and guides. Okay, so first of all, what happens? First of all, let's see. So first, let's visualize the slide first, and then I will come back to this slide. So first of all, these 2 subunits will separate. IF3 will bind at the E site. देखो IF3 ने E site पर bind कर लिया. Now these 2 ribosomes cannot fit together because they are separated now. Okay. Second thing, IF1 and IF2 together with ATP or GTP, they will come and bind at the E site. Okay. Now P site is free. P site is still unoccupied. Okay. Just the A site and the E site are occupied by IF3, and this one is occupied by IF2 and IF1 both, along with GTP. Now GTP carries some energy. Whenever you break this GTP, you will get some energy. Okay. Now you have separated the 2 subunits. Now P site is free. Okay, P site is still free. You can see this is the P site. Next, see what will happen. Now once again, let's go back to the earlier slide and see. Yeah, IF1, IF3, they will bind to the 30th subunit. Okay, we have seen how it binds. IF1 prevents tRNA from entering A site. That's a function of IF1. Okay, IF2 binds with IF1. IF2 and IF1 together, they will bind together, and then they will guide the FMET tRNA. Now the tRNA is not in picture yet. Okay, so this tRNA should bind at the P site. Okay, now that is guided by both IF2 and IF1. Okay, because P site is free. Alright, let's see it once again. First IF3 will come and bind at this site. Okay, next IF1 and IF2 together, they will bind at A site. Yes, along with GTP, they will bind at A site. Now they will guide the coming tRNA to bind at the P site, at this site. Okay, there is no tRNA as of now, but it will come in the next slide. So it will come and obviously it will sit over here because these 2 positions are occupied by initiation factors IF3 and IF1 and IF2. Okay, only the P site is free. So obviously the tRNA which is charged with an amino acid, that will come and it will bind at the P site. Here comes the tRNA and it will bind at this site. Okay, now this is the start codon. Okay, AUG, this portion is the start codon on this greenish line. Okay, this greenish line contains the start codon. Okay, this is AUG, and its complementary tRNA, that is UAC, will come and bind at this start codon. Okay, or this position is called
P position on the ribosome. Okay, now your task is accomplished now, and now what will happen next? These initiation factors will now be released, because your aim was to guide this tRNA to bind only at the P site and not at any other site. Okay, तुमको बस ये P site पर bind कराना था, वो तुमने करा दिया. Now there is no need of having IF1, IF2, IF3 over here. Okay, so we need to remove them. So next step, let's see what happens. Yes, this sequence is called Shine-Dalgarno sequence. You may skip this part, or you may also learn this, that this portion is called Shine-Dalgarno sequence. This is not in your syllabus. You may skip it. Okay, now this complex, this configuration is called 30S initiation complex. Now this large subunit wants to bind with the small subunit. For that, it needs to release this IF3, IF1, IF2. So they will be released now. So IF3 will be removed first, and IF2, IF1 will also be released later, and the last subunit will bind with the small subunit. Okay, now IF2 and IF1 will also be released. Now these are not required, these are extra things, they are not in the syllabus. Just remember how the tRNA binds with the P site. Okay, these are not required. Let's move. Okay, they are released. Okay, now your P site and E site is free. Your E site and A site, sorry, are free. This is the E site, this is the P, this is the A site, and this one is the P site. This is E, this is P, this is A. A and E are free. Okay, this complete structure is called 70S initiation complex. Okay, because this is 50S, is 30S. When they come together, they form 70S, right? So this is called 70S initiation complex. Let's move. Okay, not required at all. You may skip this part. हाँ, इसको भी छोड़ना है because eukaryotes is not in our syllabus. Let's move. Yes, the next step is called elongation. So we have done initiation. Okay, what will happen in elongation? The protein chain will grow in size. It will elongate. Okay, that is called elongation. Now you have one thing. This, let's see it once again. Let's watch it once again. This is the P site, and on the P site you have a tRNA which is charged with an amino acid. Okay, here in this case you have two amino acids. Let's ignore the second one. Just think about this condition in which you have a single amino acid. Here comes another tRNA. Now ये जो tRNA आएगा ना, ये बाइंड करेगा A साइट पर. ठीक है, पहले बार जो tRNA आएगा वो P पर बाइंड करता है, पहली बार जो आया. लेकिन जो नेक्स्ट tRNA आएगा, इट विल बाइंड एट द A साइट, नॉट एट P साइट. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट कि ये क्या हो रहा है. एक बार देखो, तो ये A साइट पर आके बाइंड करता है. ठीक है, देखो क्या हो रहा है. सो दिस इज द P साइट. यहाँ पर एक tRNA बाइंडेड कंडीशन में था. ओके, नेक्स्ट एक और tRNA आएगा, एक अमाइनो एसिड के साथ चार्ज tRNA आएगा. ओके, अलॉन्ग विथ एन अमाइनो एसिड. इट विल कम एंड इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द A साइट. ओके, आ गया और ये फ्लिप कर रहा है. देखो फ्लिप करेगा, फ्लिप कर गया. नेक्स्ट देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन हियर. यस, बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड देन द होल अमाइनो एसिड विल शिफ्ट. ओके, एंड इसके बाद ये जो tRNA है ये भी शिफ्ट करके बाहर निकल जाता है. ठीक है, वॉच इट वंस अगेन और 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा. ये देखो P साइड पर एक tRNA है अलॉन्ग विथ अमाइनो एसिड. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और tRNA आएगा विथ अमाइनो एसिड. पहले ये उल्टा कन्फिग्रेशन में आएगा और ये फिर फ्लिप करेगा, घूम जाएगा, वो घूमेगा अभी. ठीक है, घूम गया, फिर बॉन्ड बनाएगा. बॉन्ड बना के सारा अमाइनो एसिड को अपनी तरफ ले लेगा. ये सारे अमाइनो एसिड इधर आ जाएंगे आगे, और ये फिर शिफ्ट कर जाएगा. शिफ्ट कर गया तो A वाला चीज़ P पे आ गया एंड P वाला चीज़ E पे आ गया, एंड देन फ्रॉम E इट इज़ रिमूव्ड आउटसाइड, इट इज़ रिलीज आउटसाइड. ओके, इन दिस वे. सो यहाँ देखो अभी एक चेन और बढ़ गया ना, एक अमाइनो एसिड और बढ़ गया. नेक्स्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बोलो. फिर another tRNA, charged tRNA will come and it will bind here. यहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पर. ठीक है, फ्लिप करेगा, बॉन्ड बनाएगा, एंड ऑल द अमाइनो एसिड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस वन. ओके, नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, दिस विल शिफ्ट हियर. A का जो पार्ट है दैट विल शिफ्ट ऑन P, P का जो पार्ट है दैट विल शिफ्ट टू E. ठीक है, और E से वो निकल जाता है बाहर. तो इस तरह से दिस अमाइनो एसिड चेन विल ग्रो इन साइज. ठीक है, अभी देखो कैसे होता है. You don't need to remember the elongation factors, just remember कि elongation factors होते हैं. इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, भी सिलेबस में नहीं है. ठीक है, you can skip this part as well. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ.
इसका भी काम नहीं है, बस हो चुका है हम लोग का सिलेबस, जितना है उतना ही कर रहे हैं हम लोग। देखो ये बाइंडिंग दिखाया गया, इसका भी काम बिल्कुल नहीं। हाँ ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ओके, बिटवीन दीज टू अमाइनो एसिड्स, ओके, एंड देन this amino acid is transferred from P site to A site, from P site to A site, ये ट्रांसफ़र होता है। एक बार फिर से देखो, पेप्टाइड बॉन्ड बना एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम P to A site, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन, सिंपल बात है, ठीक है। एंड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन रिक्वायर्स द एंजाइम कॉल्ड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, ओके, तो सिंपल बात है, कुछ है नहीं इसमें। तो ये जो ट्रांसफर हुआ दैट इज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, दिस A site which is this A site is occupied by this tRNA, this will shift to the P site, और P site पे जो भी tRNA था that will shift to the E site, okay, and from E site it is released outside, yes। so ribosome moves one codon down mRNA, ribosome, ये जो ribosome है, अब ध्यान देना, ये जो ribosome है, this complete thing moves one codon down, down means in this direction, okay, this will move in this direction, as a result जो भी चीज़ ए पे होगा वो पी पे आ जाएगा। तो एक्चुअली ये इधर नहीं मूव कर रहा, एक्चुअली में तुम्हारा जो ये रिलेटिव टर्म्स में देखो, ये जो ग्रीन पोर्शन है ये मूव कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है, ग्रीन पोर्शन वाला mRNA ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चीज़ था वो इधर आ गया, ये स्टेबल एक जगह, ठीक है। फिर से देखो, ये इधर मूव कर रहा है, जब ये इधर मूव करेगा तो ये इधर आ जाएगा, ऊपर वाला चीज़ इधर आ जाएगा, ए का पी में आ जाएगा, ठीक है। so, ये चीज़ इधर नहीं कर रहा है, इधर कर रहा है, सॉरी लेफ्ट में मूव कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ लेफ्ट में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़, फिर से देखो, जो ग्रीन पोर्शन है ये लेफ्ट में मूव कर रहा है, लेफ्ट में मूव कर रहा है इस तरफ, ये इधर मूव कर रहा है ऐसे, देखो ये मूव करेगा विथ दिस एलोंगेशन फैक्टर, इसकी हेल्प से ये मूव करता है। अब देखो मूव करेगा, ग्रीन वाला पोर्शन मूव किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ए वाला जो पोर्शन था वो पी पे आ गया एंड पी वाला पोर्शन जो था वो ई पे आ जाता है। मूव कौन करता है, mRNA मूव करता है, ठीक है, इसी वजह से राइबोसोम एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, एक और tRNA आएगा, ठीक है, ये रिसाइकलिंग नहीं पढ़ना हमें बिल्कुल। हाँ देखो एक और tRNA आया, पहले फ्लिप करेगा, देखो यही समझना बस, ये फ्लिप किया, बॉन्ड बना, पेप्टाइड ट्रांसफरेज शिफ्ट, ई से ई में, ए से पी में, ओके, ए टू पी और पी टू ई। नेक्स्ट एक और tRNA आएगा, ये सब कुछ नहीं पढ़ना जो हो रहा है अभी, इवेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ने, ये सब एक्स्ट्रा है। देखो फिर से ट्रांसफरेज रिएक्शन हुआ, शिफ्ट होगा, ठीक है, तुम्हारे जो यहाँ पर जो चेन है ये ग्रो कर रहा है लगातार, इसमें ग्रोथ हो रही है, इसमें एक एक अमाइनो एसिड ऐड होता जा रहा है और इसी को इलॉन्गेशन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है टर्मिनेशन, बस इस तरह से इलॉन्गेशन होता रहेगा, एक लंबा चेन बन जाएगा एंड देन फाइनली दिस विल स्टॉप, ओके। जब भी ये स्टॉप होगा तो वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ सम सिग्नल्स, ओके, नाउ दोज सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टॉप कोडॉन्स, ओके, एंड ये जो स्टॉप कोडॉन्स है इनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है लाइक RF1 RF2, ओके, सो ये तुम्हारे ऊपर है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है वैसे, बट अगर तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है तो प्रोकैरियोट्स का तुम कर सकते हो कि UAG के लिए RF1 लगता है, UGA के लिए RF2 लगता है, और RF1 RF2 दोनों मिलकर UAA को रिकॉग्नाइज करते हैं, बट ये हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा मत पढ़ो, ठीक है। तो बस तुमको क्या करना है, बस ये याद करना है नाम, इसका मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ तुमको नाम, इसका नाम क्या होता है, UAG का नाम एम्बर, दिस इज कॉल्ड एम्बर, ओके। UGA इज कॉल्ड ओपैल, ओके, this is called amber, AMBER amber, UGA is called opal, OPAL opal, okay, UAA is called ochre और ochre, OCHRE, okay, बस इतना याद करना, तीन होते हैं ऐसे। लेट्स मूव। टर्मिनेशन क्लास 1 क्लास 2 बिल्कुल नहीं पढ़ना। क्या होगा जब भी यहाँ पर इस एरिया में जब यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ जाता है, ठीक है, स्टॉप कोडॉन जैसे UAA, UGA या फिर UAG, तो इनके लिए जब भी tRNA आएगा ना कोई बाहर से, वो खाली हाथ आएगा, ठीक है,
वो खाली हाथ आएगा। इट्स इमेजिन लाइक ऐसा कुछ है, तुम्हारी बर्थडे पार्टी है या कोई पार्टी है, ठीक है, तुमको गिफ्ट्स मिल रहे हैं एक के बाद एक, तुम्हारे एक फ्रेंड्स आ रहे हैं गिफ्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये गिफ्ट्स क्या है, ये सारे, ये जो चेन है, ये चेन कौन बना रहा है, ये गिफ्ट्स का चेन है मान लो, ठीक है। तुम गिफ्ट्स ले रहे हो, चेन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हर एक फ्रेंड एक एक गिफ्ट लेके आ रहा है, इतने सारे गिफ्ट्स लेके आ गए हैं, ठीक है, इतने सारे गिफ्ट्स तुमको मिल चुके हैं ऑलरेडी। अब तुम यहाँ पर एक और गिफ्ट ऐड करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर तुम यहाँ पर ऐड करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा जो फ्रेंड आया इस बार वो खाली हाथ आ गया, तुम्हारा जो चेन था वो ब्रेक हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ भी कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टी-आर-एन-ए है, अगर तुम्हारा स्टॉप कोडॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो स्टॉप कोडॉन के लिए जो भी टी-आर-एन-ए होता है वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता, वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता। दैट मीन्स यहाँ पे कोई चेन का ग्रोथ नहीं हो पाएगा एंड अल्टीमेटली दिस प्रोसेस विल स्टॉप, ओके। और यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा एंड दिस इलोंगेशन विल स्टॉप एंड प्रोटीन चेन विल बी रिलीज्ड आउटसाइड, ओके। यही है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। चलो देखते हैं। जैसे ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये सब जो भी क्लास 2 क्लास 1 है, ये सब हायर क्लासेस में तुमको पढ़ने होंगे। तो बस हो चुका है ट्रांसलेशन कंप्लीट, यहाँ से ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। तुमको बस ये याद रखना है कि स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, देन दिस इलोंगेशन का जो प्रोसेस है इट विल स्टॉप देयर, ठीक है। ये रिलीज़ हो गया और रिलीज फैक्टर उसमें लगता है, ये भी हमें नहीं पढ़ना। राइबोसोम रिसाइकलिंग भी होता है, ठीक है, याद रखना है रिसाइकलिंग होता है, कैसे होता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारे सिलेबस इतना बिल्कुल नहीं है। और अप्लाई योर नॉलेज में भी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस मिलेंगे, एंटीबायोटिक्स के ऊपर है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन भी कंप्लीट कर लिया है। मैं बोलूँगा एक बार फिर से वीडियो देखना, अगर देख लियो एक बार तो ठीक है, और जब भी ज़रूरत पड़े एक बार रिवाइज मारते रहना, तुमको याद हो जाएगा, और बुक पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ट्रांसलेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कर सकते हो। चलो, और भी कोई डाउट हो मुझे डेफिनेटली पूछना मेरे से। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, बाय बाय।